Having understood all the major hepatobiliary diseases, now it's time to talk about some minor hepatobiliary conditions. Okay, let's talk about non-alcoholic fatty liver disease. Let's talk about primary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis. There are few interesting facts about these diseases, particularly primary sclerosing cholangitis. Okay, this is closely associated with ulcerative colitis, that is inflammatory bowel disease, right? Both of these conditions are related to smoking. And what is the relation? Smoking is beneficial in these two conditions. It is seen that incidence of primary sclerosing cholangitis and ulcerative colitis is lesser in smokers, right? So you can conclude that smoking is beneficial in these two cases. There are few other conditions also in which it is claimed that smoking is beneficial, right? These are primary sclerosing cholangitis, ulcerative colitis, endometriosis, Alzheimer's disease, right? आगे चल के पढ़ोगी endometriosis gynae में, और Alzheimer's disease we will discuss in neurology. Okay, so in these four conditions, smoking is beneficial. Okay, what is non-alcoholic fatty liver disease? An alcoholic person developing alcoholic liver disease is fully understandable. But a non-alcoholic person or a person who rarely takes alcohol might develop what? A condition similar to alcoholic liver disease that is known as non-alcoholic fatty liver disease. Very unfortunate. कुछ पीने वालों को कुछ नहीं होता है, राइट? बिल्कुल नॉर्मल लिवर होता है, नो फैटी लिवर, नो स्टेटोहेपेटाइटिस. But unfortunately, even few non-alcoholic persons might develop a disease similar to alcoholic liver disease, which is in fact more severe than alcoholic liver disease. Okay, कैसे होता है? We will discuss it. Let's talk about non-alcoholic fatty liver disease. As in case of alcoholic liver disease, there starts accumulation of fat in liver. Then over a period of time, it develops steatohepatitis, then cirrhosis, then hepatocellular carcinoma. In similar fashion, even in non-alcoholics, first of all, fat starts getting accumulated in liver. So simply there will be fatty liver, right? Known as non-alcoholic fatty liver. Okay, non-alcoholic fatty liver. Over a period of time, there will be inflammation and hepatocellular damage, leading to non-alcoholic steatohepatitis. Okay, earlier there was only fat accumulation. Later to it, what happened? There started inflammation and hepatocellular damage. इसका मतलब यहाँ पे SGPT और SGOT will start to increase. Over a period of time, this can progress into liver cirrhosis or even hepatocellular carcinoma. So these are the series of events. Okay, in case of non-alcoholic fatty liver disease, क्या है? Non-alcoholic fatty liver, non-alcoholic steatohepatitis, cirrhosis, or even hepatocellular carcinoma. These are the spectrum of non-alcoholic fatty liver disease. Simple steatosis, then fibrosis plus inflammation, that is non-alcoholic steatohepatitis, cirrhosis, hepatocellular carcinoma. Similar events as we have already discussed in case of alcoholic liver disease. Let's talk about non-alcoholic fatty liver disease. First of all, you can relate it to simple fatty liver. What is that? Non-alcoholic fatty liver. Okay, this might progress into non-alcoholic steatohepatitis. Right? There might be inflammation resulting into hepatocellular damage, resulting into increase in liver enzymes. Then chronic liver disease, be it cirrhosis, that is compensated or decompensated. It can also progress into hepatocellular carcinoma. कितना सिंपल है? ओके, यहाँ पे हम लोग कहते हैं देयर इज सिंपली एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन लिवर, राइट? तो क्या होगा? हिपेटोमेगाली वगैरह होगा, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं आएगा. एंड यू व्हेन यू हैपन टू इन्वेस्टिगेट इट, SGPT, SGOT will come out to be normal, right? Because there is no inflammation, there is no hepatocellular damage. But in case of non-alcoholic steatohepatitis, SGPT and SGOT will rise. Okay?
due to inflammation and hepatocellular damage. Over a period of time, there will be fibrosis, right, which can be picked up by fibroscan, and then this disease can also progress into hepatocellular carcinoma. You can predict progression of disease in case of alcoholic liver disease. It is simple to treat. Patient ने alcohol छोड़ दिया, आधा काम हो गया. But you cannot predict the progression of non-alcoholic fatty liver disease. This carries poorer prognosis, right? This is worse than alcoholic liver disease, right? So there must be few risk factors, right, which can cause non-alcoholic fatty liver disease, okay? So here person is not consuming alcohol, right? He might be consuming alcohol, but he is not a drinker, okay? तो permissible limit से कम ले रहा है. तो non-alcoholic में क्या risk factors होंगे जो क्या करा सकते हैं? Non-alcoholic fatty liver disease, okay? So there are substances other than alcohol also which might affect your liver, right? यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सबसे important factor हो गया obesity. In obesity, it is logical, fat is accumulated all over body. Liver में भी extra आ गया, okay? So increased fat might come to liver also, right? Resulting into fatty liver, right? Which can progress into steatohepatitis and further into cirrhosis or hepatocellular carcinoma. Second thing you guys must note over here is diabetes, type 2 diabetes mellitus, right? Wherever there will be insulin resistance, it can lead to non-alcoholic fatty liver disease. तो यहाँ पे क्या हो सकता है? Insulin resistance. When there will be insulin resistance, there will be more of insulin, right? To overcome that resistance. अगर insulin ज़्यादा होगा, it will prevent lipolysis. It will increase lipid fat deposition, okay? Which can happen into your liver also. So be it polycystic ovarian syndrome, be it type 2 diabetes mellitus, both of them are predisposing factors for non-alcoholic steatohepatitis, okay? Other conditions जिसको हम लोग metabolic syndrome से relate कर सकते हैं, metabolic syndrome. Increased sugar, diabetes mellitus में हो गया, right? Increased BP, increased waist hip ratio, right? And increased what? Fat in body, that is decreased lipid profile. तो ये सब क्या हो गए? आपके proven causes हो गए. इनके अलावा कुछ endocrine causes से भी क्या हो सकता है? Non-alcoholic fatty liver disease, particularly hypothyroidism, right? और hypothyroidism को भी relate कर सकते हो. Person develops क्या? Person gains lot of weight, मोटा हो जाता है इंसान, right? तो अगर fatty liver की बात होगी तो यहाँ पे भी हो सकता है. कुछ और कॉजेज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मान लो स्टारवेशन है, क्वासियोरकर है, मासियोपेरासिस है, वहाँ पे भी फैटी लिवर इज़ वेरी वेरी कॉमन, ओके? वन मोर थिंग, यू हैव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. ए पर्सन इज नॉट गिवन एनीथिंग पर ओरल, राइट? गट का कोई यूज़ नहीं है. व्हेन गट इज़ नॉट गेटिंग स्टिमुलेटेड, इवन लिवर विल नॉट बी दैट फंक्शनल. तो बाइल जूस का भी सिक्रीशन कम होगा, ओके? तो थिंग्स विल एक्यूमुलेट. एग्जाम्पल, बाइल एक्यूमुलेट होगा लिवर में, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होगा, है ना? अदरवाइज बाइल में सिक्रीट हो जाता है, ओके? तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर ऑफ फैटी लिवर, इवन कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ओके? सो दीज आर established and suspected risk factors of non-alcoholic fatty liver disease. सिंपल याद कर सकते हो, ओबेसिटी में हो सकता है, फैट हर जगह एक्यूमुलेटेड था, लीवर में भी आ गया. डायबिटीज़ में हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हो सकता है, ओके? लेट्स रिवाइज. नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ओके? सबसे पहले हम लोग इसकी स्पेक्ट्रम लिख लेते हैं. नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर, यहाँ पे क्या होगा? SGPT, SGOT normal, okay? Then you have non-alcoholic steatohepatitis, inflammation of liver along with hepatocellular damage, okay? तो हम लोग कहेंगे liver enzymes will start to increase. SGPT more than SGOT. SGOT कब ज़्यादा होता है? अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ में. अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? यूजली ऑलवेज व्हाट? SGPT is more than SGOT. So this will be same in non-alcoholic fatty liver disease. Cirrhosis हो गया, okay? Chronic liver disease. और क्या हो गया? Hepatocellular carcinoma. Everything is understandable. अगर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो जो established हैं
उनमें ओबेसिटी, डायबिटीज मिलाइटिस, hypertension, increased fat in your body resulting into deranged lipid profile, सबको समराइज कर सकते हो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। ओके, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस और कहाँ पे मिल सकता है? PCOS मिल सकता है। हम लोगों ने टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की भी बात की, एंड यू कैन रिलेट दिस थिंग टू मैल न्यूट्रिटिव स्टेट्स लाइक मेरेसनेस, क्वासियोकर और इवन स्टार्वेशन। कुछ फीचर्स इसके, generally it is asymptomatic. Sometimes they only complain in case of chronic liver disease patient, including steatohepatitis, liver fatigue, right? And then sometimes due to hepatomegaly, person might develop right-sided abdominal discomfort. Okay? ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. Okay? फीचर्स में क्या होगा? ALT and AST both will increase along with DST. कब इंक्रीज होगा? व्हेन देयर विल बी नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस. कौन सा ज़्यादा होगा? जब हम लोग एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ की बात करते हैं, ALD, देन AST इज यूजुअली मोर देन ALT. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एल्कोहलिक लिवर डिसीज. डिसीजेस अदर देन एल्कोहलिक लिवर डिसीज हैव यूजुअली व्हाट? नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज. अगर स्टेटोहेपेटाइटिस है तो क्या होगा? ALT as in other liver conditions will be more than AST. Okay? हम लोग alcoholic liver disease में देखे थे AST versus ALT. If more than 3:1, it is confirmatory of alcoholic liver disease. हम लोग यहाँ पे ग्रेडिंग कर सकते हैं, राइट? अगर 5% से ज़्यादा हिपैटोसाइट्स में फैट एक्यूमुलेट हो जाए, राइट, देन इट इज़ नोन एज फैटी लिवर. ओवर पीरियड ऑफ टाइम percentage of hepatocytes with fat will increase and it will lead to worsening of the disease. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में? वी हैव टॉक्ड अबाउट नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, देन नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस which might progress into cirrhosis, which might progress into hepatocellular carcinoma. And there are certain risk factors, right? These are metabolic syndromes, diabetes, hypertension, obesity, PCOS, TPN, hypothyroidism, etc. Now it's time to talk about the treatment part, right? So many drugs have been tried, right? But the best treatment over here is what? Lifestyle modification, right? Lifestyle modification. Increase activity, decrease weight, decrease stress, टेक प्रॉपर डाइट, राइट? डाइट. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ओवर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर NASH पर्सन डेवलप्स फाइब्रोसिस, देयर इज ऑनगोइंग लिवर डैमेज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रोटिक टिश्यू. सो यू कैन ट्राई फ्यू एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट? एंड देयर इज नो बेटर एंटीऑक्सीडेंट देन विटामिन ई. अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात किया जाए इन नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, इट हैज़ टू बी विटामिन ई. ओके, और भी ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, पायोग्लिटाजोन हो गया, बट इफ यू आर आस्क्ड अबाउट वन ड्रग, इट हैज़ टू बी विटामिन ई. सो दैट्स ऑल अबाउट नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, राइट? हम लोगों ने काफ़ी लॉजिकली डिस्कस किया है, राइट? हमेशा पीना नुकसान नहीं होता, एक रॉन्ग लाइफ स्टाइल कैन अफेक्ट यू मोर. What about primary biliary cirrhosis, right? Nowadays known as primary biliary cholangitis. Cholangitis. Okay, काफ़ी commonly एग्जाम में पूछा जाता है. Okay, here you see there is intrahepatic inflammation and fibrosis of biliary ducts. So there is basically inflammation and fibrosis of only intrahepatic bile ducts. Very very simple. और ये क्या होगा? इम्यून मीडिएटेड होगा, राइट? हम लोग कहेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंड दिस एंटीबॉडी इज व्हाट? एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी. ओके, so this causes inflammation of intrahepatic bile ducts leading to what? Inflammation, damage and fibrosis of intrahepatic bile ducts leading to kya? Paucity of bile flow, right? That is cholestasis. So this can cause cholestatic jaundice as well as progressive damage of liver. Okay, the point over here which can be noted is it only affects intrahepatic bile duct.
okay, and the antibody involved over here is anti-mitochondrial antibodies, okay. एक और लिवर की कंडीशन हम लोगों ने देखा था जो कि प्योरली इम्यून मीडिएटेड था. व्हाट वाज दैट? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. सो बी इट ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, both conditions can lead to liver failure and you might need liver transplant. And the peculiar thing about both these conditions is that even after transplant, their disease can recur. तो दोनों ऑटो इम्यून सिचुएशंस में अगर ट्रांसप्लांट करोगे तो लॉजिकली याद कर सकते हो इन बोथ दिस डिसीजेज देयर कैन बी रिकरेंस, ओके. हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इट कैन कॉज क्रॉनिक कॉलेस्टेटिक लिवर डिसीज. ऑटो इम्यून बेसिस है. बीइंग एन ऑटो इम्यून कंडीशन किस में ज़्यादा होगा? फीमेल्स में मेल से ज़्यादा होगा. दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल, राइट. इट कैन प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ लिवर डिसीज, राइट. हम लोग यहाँ पे बात करेंगे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, ओके. आगे चल के UDCA कैन given as a part of treatment, right, which can mobilize the bile flow, but ultimate treatment can be liver transplantation, okay. And chances of recurrence is still there, recurrence present, okay. तो कौन सी दो डिसीजेज हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी रिकरेंस होगा, राइट. जहाँ पे मेनली क्या होंगी? यू हैव ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस and you have primary biliary cirrhosis or cholangitis, okay. प्रेजेंटेशन क्या होगा? ज़्यादातर लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होगा और कोई भी क्रॉनिक लिवर डिसीज हो ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही है, राइट. एक चीज़ जो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है फटीग, क्योंकि कॉलेस्टेटिक कंडीशन है. इट कैन ऑल्सो लीड टू प्लूराइटिस, ओके. कॉलेस्टेसिस हो रहा है तो बॉडी इज अनेबल टू सीक्रेट एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सो देयर माइट बी ऑल्सो xanthelasma or xanthomas, right, deposition of these substances, xanthomas and xanthelasmas, okay. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं being an autoimmune condition, it can be also associated with other autoimmune conditions. Particularly you need to remember the Sjogren syndrome, right, that is Sika syndrome, Kress syndrome, right. और यहाँ पे एक और डिसीज याद करना है आपको, renal tubular acidosis, okay. These are various associations of primary biliary cirrhosis. Which antibody is center of attraction over here? It is mitochondrial antibodies, okay. So how you are going to diagnose this case? Diagnosis के लिए क्या होगा? पहली चीज you have cholestatic jaundice. So in case of cholestasis, right, particularly there is raised level of alkaline phosphatase, okay, और इवन गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेस. तो जिस पे हम लोग ज़्यादा रिलाई करेंगे इन दिस केस दैट इज गोइंग टू बी एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ओके. और एंटीबॉडीज लेवल देखेंगे तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, ओके. अगर फाइब्रोसिस है यू कैन ऑल्सो गो फॉर फाइब्रोस्कैन. द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओवर हियर इज रेज्ड एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, ओके. टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, right. You can treat this case, right, symptomatically by giving ursodeoxycholic acid to mobilize that bile flow, right. But usually these conditions fail and ultimate treatment is liver transplant. And unfortunately even after liver transplant this disease can recur in transplanted liver as well. दूसरी कौन सी डिसीज थी? autoimmune hepatitis which can recur in transplanted liver, okay. Let's take a multiple choice question over here, right. कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शंस देख के रूल आउट करके सॉल्व करते हैं, ओके. यहाँ पे पूछ रहे हैं हम लोग यूनिक फीचर ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एक्सेप्ट, ओके. हम लोग बात कर लेते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे. xanthelasmas, करेक्ट, राइट, ड्यू टू कॉलेस्टेसिस. xanthomas, करेक्ट. pruritus, this is a cholestatic disease, person might develop pruritus. We did not talk about hypopigmentation. और यही एक ऑप्शन है जिसको तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो. देयर विल बी हाइपर पिगमेंटेशन, ओके. हाइपर पिगमेंटेशन इन केस ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. यू कैन मार्क, ओके. रूल आउट करके भी क्वेश्चंस कर सकते हो. देन वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, राइट. हम लोगों ने बात किया था किससे रिलेटेड है? अल्सरेटिव कोलाइटिस से. और दूसरी चीज़ क्या है? स्मोकिंग इज बेनिफिशियल. स्मोकिंग इज बेनिफिशियल.
और हम लोगों ने कुछ कंडीशंस देखा था जहाँ पे स्मोकिंग बेनिफिशियल होगा. आई होप यू गाइस रिमेंबर दैट थिंग. व्हाट इज डिफरेंस फ्रॉम primary biliary cirrhosis? Here, fibrosis will be more marked as compared to inflammation, and this will involve both what? Intrahepatic plus extrahepatic bile ducts. Intrahepatic plus extrahepatic bile ducts. Right? Fibrosis will be more as compared to what? Inflammation. So primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis will affect intrahepatic as well as extrahepatic bile ducts leading to fibrosis and then cholestatic jaundice. Okay? तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कंपैरेटिव वे में लेते हैं और बाकी फीचर्स हम लोग दोनों डिसीजेस के देखते हैं. बात करते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ऑटो इम्यून कंडीशन, फीमेल में मेल से ज़्यादा होगी, राइट. बट द रिवर्स इज द केस इन केस ऑफ प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, जिसमें मेल में फीमेल से ज़्यादा होगा. इंट्राहिपैटिक, इंट्राहिपैटिक प्लस एक्स्ट्राहिपैटिक. ओके. और अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक एंटीबॉडी मीडिएटेड है. प्राइमरली द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज. ओके. यहाँ पे एंटीबॉडीज का रोल उतना सिग्निफिकेंट नहीं. ओके. एसोसिएशन with other autoimmune conditions, we did talk about CREST syndrome, Sjogren's syndrome, right, or even rheumatoid arthritis, SLE, और कभी कभी renal tubular acidosis से भी associated है. यहाँ पे ulcerative colitis. What is more important? There is very little or no chance of developing carcinoma in case of primary biliary cirrhosis, whereas this condition can be related to cholangiocarcinoma apart from cirrhosis, that is end stage liver disease. कैसे याद कर सकते हो? This is similar to ulcerative colitis. Ulcerative colitis में you can develop colorectal cancers. Okay. In the similar way, in primary sclerosing cholangitis, a person can develop what? Cholangiocarcinoma. Cholangiocarcinoma. Okay. By this way, you can relate which disease is going to cause cancer in later part of life. Okay? तो जब sclerosing cholangitis होगा, तो there will be fibrosis of intra plus extra hepatic bile ducts. Okay? किस में ज़्यादा होगा? मेल में ज़्यादा होगा as compared to female. Okay? What else हम लोग कहेंगे? Chances of cholangiocarcinoma are there. Okay, present. So these are few important points regarding primary sclerosing cholangitis. किससे associated होगा? ulcerative colitis से. Benefit of smoking. तो कुछ हम लोगों ने important points यहाँ लिए हैं जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. Right? So this will cause cholestatic jaundice, which can result into chronic liver disease or even cirrhosis, and majority of patients might stay asymptomatic for long period of time, and first manifestation over here can be pruritus fatigue followed by pruritus, and over period of time person will develop jaundice and other signs of chronic liver disease, mainly of cholestatic jaundice, okay, leading to cirrhosis or even cholangiocarcinoma. Ulcerative colitis में भी there is risk of cancer, that is colorectal कैंसर. तो इसको हम लोग हैंड इन हैंड लेके चल रहे हैं किसके साथ? अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ. बी इट स्मोकिंग, बी इट चांसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग टू कैंसर. मेन सिम्टम इज फटीग फॉलोड बाय प्रूराइटिस. ओके. एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम अदर मैनिफेस्टेशंस कैन बी सीन. लेट्स टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक पार्ट. राइट. तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व भी होगी, राइट, बट उतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं. Chances of finding some of the antibodies are there, mainly that is P ANCA, which is also associated with ulcerative colitis. Here the diagnosis is made by ERCP, okay, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, or MRCP, that is magnetic resonance cholangiopancreatography. Which is superior? This one is superior, right? Okay. So we have discussed what? प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस किसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है? जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, राइट, वैसे प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस है कैन बी एसोसिएटेड विद पी ANCA.
ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया आपके पास, MRCP की इमेजेस हैं, जहाँ पे कहीं कहीं पे डायलिटेशन होगा, कहीं कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक वन मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस आर ट्रू एक्सेप्ट। राइट, हम लोगों ने पहली लाइन डिस्कस किया था, देर इज क्या, डिक्रीज्ड रिस्क इन स्मोकर्स। ओके, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, बिल्कुल है। GGT एलिवेशन अकर्स अर्ली, बिल्कुल होता है। कॉलेस्टेटिक जॉन्डिस है। ELP एंड गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज कैन इंक्रीज, विच इज अर्लीस्ट, GGT is earliest. Okay, pruritus is a common symptom. Yes, it is relatable. Fatigue followed by pruritus, right? Fatigue सबसे common है, followed by pruritus. Okay, so we have discussed all the miscellaneous conditions of liver as well in a very logical fashion. I hope you guys will remember all the relevant points till your exams. Bye bye, take care.